Hi guys, and welcome back to my channel, and if you guys are new to my channel then welcome. So today I have created this mauve burgundy champagne silverish halo eye makeup look for you all. So if you guys are interested in knowing how to create this look, then please keep on watching. So to start off, I'm first going to apply L'Oreal's Infallible Glow Lock Illuminating Primer. This primer you don't actually get it in India. जब मैं travel करी थी तभी मैंने इसे buy किया था और काफ़ी अच्छा primer. It's quite moisturizing. And for my foundation today, I am applying Maybelline's Superstay 24 Full Coverage Foundation, and I'm mixing two shades, 310 and 220. And for my concealer, I'm applying a Too Faced Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer in shade Golden Beige. ये first time था जब मैंने आज concealer use किया है ये वाला, and it is so good. It's so hydrating guys. You need to try this. और अगर आपका under eyes बहुत dry है, then definitely आपको ये concealer try करना चाहिए. I am in love with this concealer. It's amazing, great coverage and super hydrating. और इसका जो फिनिश भी है इतना अच्छा है, लाइक जिस फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आई एम इन लव विद दिस कंसीलर. एंड ऑल्सो इट इज़ सुपर लाइट वेट, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट लगाया है. एंड आई एम गोइंग टू सेट माई कंसीलर विद RCMA ट्रांसलूसेंट पाउडर. इस पाउडर को एक्चुअली मैंने अपने पैक के एक जार में ट्रांसफ़र कर दिया था, तो ये RCMA पाउडर है. And I'm going to set rest of my face with NYX HYDRA Touch Powder Foundation, and this one is in shade Golden. ये powder भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी lightweight है, and it matches perfectly well with my skin tone. And for my blush, I'm going to apply NYX Duo Chromatic Illuminating Powder in shade Synthetica. आप देख सकते हैं कि ये जो blush है बहुत ही खूबसूरत glow देता है. So let's move on to eye makeup. तो सबसे पहले मैं Urban Decay का आई शैडो प्राइमर पोर्शन अप्लाई कर रही हूँ. तो आज आई शैडो के लिए मैं COLOURPOP का प्रिटी मच आई शैडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और सबसे पहले मैं कूल इट आई शैडो अप्लाई करने वाली हूँ. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस आई शैडो ऑन माई इनर कॉर्नर एंड ऑन माई आउटर कॉर्नर. So I'm pressing these eye shadows ताकि there is no fallout and we get maximum pigment. And now I'm going to go in with Neither Do I eyeshadow, and I'm going to follow the same technique. And now I'm going to join both these corners, and as you can see I have gone slightly above my crease, and I'm slightly going to wing it out. And now I'm going to go in again with Cool It eyeshadow, and I'm going to go over Neither Do I eyeshadow. And now with a clean brush, I'm going to diffuse the edges. And now I'm going to go in with BISH eyeshadow, and I'm going to wet my brush for maximum intensity, and I'm going to apply this shadow right in the center. And since मेरे hooded eyes है, मैं इस आई शैडो को हल्का सा अपने crease के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा. अब मैं BISH आई शैडो के ऊपर अपना USHA'S का लिक्विड आई शैडो इन नंबर 07 अप्लाई कर रही हूँ. Now for my lower lash line, I'm going to first go in with Cool It eyeshadow, and I'm going to apply this eyeshadow all the way till my inner corner.
Then I'm going to go in with neither do I eyeshadow और उसे मैं outer corner जो 3/4 area रहता है outer corner का वहाँ पर apply कर रही हूँ. एंड देन ये जो OTP आई शेडो इसे मैं अपने पेंसिल ब्रश से अप्लाई करने वाली हूँ अपने टीयर डक्ट एरिया पे और उसे फिर थोड़ा आउटवर्ड्स पुल करूँगी. And on my waterline, I'm going to apply NYX Slide On Glide On Stay On eye pencil in shade Jewel. And then for my eyeliner, मैं अप्लाई कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक्स का I Want You So डबल मैट eyeliner. And I'm going to coat my lashes with Maybelline's Lash Stiletto mascara. ये भी मैं जब ट्रैवल करी थी तभी ये मैंने बाय किया था and honestly guys, not that great. And here I'm applying PAC's eyelashes in number 53. And then I'm going to again touch up my eyeliner. और आप अभी बस देखने ही वाले हैं कि मैंने क्या हरकत कर दी. Yes, ये हो गया, ये हो गया. I hope you all can relate. And now I'm going to add some color to my lips, and today I am applying MAC's Brave lipstick. And as a final step, I'm going to set my makeup with Milani's Make It Last setting spray. So this halo eye makeup tutorial comes to an end guys, and I really hope that you enjoyed this video, and if you did then do not forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and please hit on that notification bell so you guys are notified every single time I upload a new video. And I shall see you guys very soon in my next one. Until next time, keep reviving your own fashion.